Hello everyone, welcome back to Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. Well, I am Pushpendu and let me welcome you to the first session from the chapter Living World. And this is Mission MBBS. Okay, so what we are going to do is talk about a lot about the subject. बहुत कुछ discuss करने वाले हैं. Now there are some questions. I see a lot of students have already joined with me in this live session. कि आपको ये सवाल है आपके पास कि 2024 aspirants and 2023 aspirants, can both of you join? Yes, definitely. Why not? Yes, you can, right? If you wish to revise few things, please join. If you wish to learn these chapters from scratch, please join. मिलके पढ़ेंगे, right? So it's for all of you, and this is the chapter Living World. The Living World, first chapter. बहुत आसान, easy but interesting chapter है क्योंकि I'll share an honest story about this once I start. Okay, before I start, let me see who all have joined here with me. I have already seen a lot of Deepman is here, Gayatri is here, I have seen Sai Prasad, you're here, Astha, good evening, Shikha, Ritu, Adin, you're great, you're here. Okay, great. Colorful World, good evening. Okay, good name. Deepu, welcome back. Sai Kumar, Ria, Junyad, Kubi, Sneha, sorry. Ahana Satpati, if I have pronounced your name correctly. Yes, Palak, great. I see a lot of students और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करें. हेलो सर, आई एम इन 9th. Yes, you can join. ये बेसिक चैप्टर है, प्लीज एक हेड्सअप मिल जाएगा आपको, राइट? ज्वाइन करो, पढ़ के तो देखो. अगर नहीं समझ में आ रहा देन यू कैन इट्स योर विश. आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो इस सेशन से, बट ट्रस्ट मी, आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा. आप बताना मुझे कि आपको समझ में और मजा आ रहा है नहीं. ठीक है, चलो, ग्रेट. आई एम गुड दीपमन, आई एम गुड. I love biology. Okay, a lot of students have joined. Now it's great. Quickly, एक highlight दे देता हूँ. You should quickly download our app, the Aakash BYJU'S app. 14 days के लिए आपको बस फ्री मिल जाएगा. सब कुछ देख सकते हो आप, एक ग्लिम्स ले सकते हो कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं. How do we teach? Is it different? Yes, it's different, right? As I am always telling, हम लोग जो पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, वो बहुत डिफरेंट है, पर्सनलाइज्ड है आपके लिए, और सारे बच्चे जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंट होता है, राइट? द वे आई लर्न इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू विल लर्न. सो ये ऐप आपको गाइड करेगा. कांस्टेंट मॉनिटरिंग होता है, टेस्ट होते हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक्स देते हैं आपको, एनालिसिस देते हैं, ताकि आपको समझ में आए, यू अंडरस्टैंड वेयर यू लैक एंड विच आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, है ना? सो एनालाइज करके दे देंगे आपको आपका परफॉर्मेंस, राइट? आपकी स्ट्रेंथ्स जो है, आपके वीकनेसेस जो है, वो सब हम लोग what we will do, we will identify it for you, and that will help you out in your preparation strategies. Okay, well, to tell it in a crisp manner, यहाँ पे if you are associating, if you are joining us, what happens is आपको एक full package मिल जाता है. You become ready for your examination, right? And who are teaching? Well, talking about this series, Mission MBBS, I will be there. Dr. Sachin Kapoor will be there. Pankudi ma'am will be there. So we all will be helping out with the biology subject. Other than that, there is Anushri ma'am for physics. There is chemistry sir who is coming up, right? So all subjects, in fact, जो rockstar teachers है, जो भी आपके पास पहुंचना चाहिए था आपके पास, राइट? जिनके टीचिंग मेथड्स, तरीका बहुत डिफरेंट होते हैं, और we have been teaching a lot of students all over the country, and we have produced results. You can see the Aakash BYJU'S results from last year, right? So yes, that's the reason we are here, because we also want that the new students, they also get good ranks, qualify this NEET examination with flying colors. Ankita ma'am is also joining. Ankita ma'am, you know her, right? Yes, I just before doing this live, I was just entering the studio. I saw her. I think she's busy with another live from the studio, right? Yes, Ankita ma'am. Ankita ma'am right now is involved in some other sessions. तो वहाँ पे आप वहाँ पे भी follow कर सकते हो, right? So let's see. ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? Well, I'll tell you. So यहाँ पे ना what you have to do is we will make it interactive. Question answer
सेशंस करते करते हम पढ़ेंगे, सवाल जवाब करते करते पढ़ेंगे। नमस्ते जी जिग्नेश, नमस्ते। Yes sir, I know her very well, I have studied from her. Very good Asta, good. Bina ma'am will be there. Bina ma'am is involved in another series. Please follow that also. It's all there in the Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. So subscribe to the channel, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। जितने सारे टीचर्स आपको चाहिए, जैसे चाहिए, अलग अलग सीरीज हम लोग कर रहे हैं। न्यू सीरीज के लिए यू नो वी आर ट्राइंग आउट न्यू सीरीज, सो जस्ट बी एसोसिएटेड विद अस एंड टेक द बेनिफिट, राइट। चलो, विदाउट एनी डिले, let's start with an activity and introduce ourselves to the chapter, The Living World. ठीक है, ready? Are you ready? Who is new? Mahin, you are new? कोई बात नहीं. Yes, we have started. Extraordinary you. Yes, Sachin Sir is definitely here in this particular session. He's also taking other sessions. Please see that. Well, एक छोटा सा activity करेंगे, बहुत आसान सा activity. And before that, I told you that I will tell you my experience from 10th to 11th, and when I got to know about this first chapter, trust me, this was my experience. My experience was that, oh, अब तक जो पढ़ रहा था मैं, whatever I was studying so far is so different what I'm studying in 11th and 12th. In 11th specifically, when I moved from 10th to 11th, I was amazed when I got to know, okay, just the simple term living, organisms has so much in it. It's not easy to say, okay, this is living, this is non-living. It's not so easy. बचपन में तो ऐसे ही पढ़ लेते थे, राइट। ये नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं, वो नॉन लिविंग है, कुछ और या कोई और लिविंग है। पर लिविंग नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए क्राइटेरियाज होते हैं। इनफैक्ट कुछ सिचुएशंस है, वी विल टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पे वी वोंट बी एबल टू क्लासिफाई समथिंग एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेट्स सी, right? We'll do it. Garima, you are new? कोई दिक्कत नहीं. We'll start introducing ourselves. Chapters का one shot बाकी सब वो. Okay. Who's okay? Fine. I think we'll start it now. चलो. In the meantime, please like the session so that I understand. Yes, you are liking these sessions, and we can bring up with more and more sessions for your understanding purpose. Okay, so like the session, that acts as a booster for me. Let's start with this activity. What you have to do, simple thing, you have to identify the living and non-living. ठीक है, तो कैसे करोगे? Right hand में count the number of living that you are seeing. Just count the number. Left hand में non-living. चलो फटाफट करो. Yes, this is my first session with me. Okay, Ankit, welcome. Come on, right and left ऐसे लिखो, right the number, left the number. Easy है, this is very easy, right? बहुत आसान है. But I will tell you why I am asking this question. ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं. Also share the session to all your friends, everyone. सबको बुलाओ, सब मिलके पढ़ते हैं, तब ना आपको पता लगेगा कि what is your status. Are you here? Are you here? Are you here? Right? Or you are nowhere in the picture, because NEET examination is all about lakhs and lakhs of students who are going to appear for this examination. So आपको ये पता होना चाहिए कि आपका status क्या है, आपका study preparation किस level पे चल रहा है. You have to compare yourself with how others are preparing, because it's a very important and competitive examination, right? चलो, let's see. ये है numbers. ये living है, ऊपर जो box में डाला हुआ है ये living है, right? Saki, why do we sweat after drinking water? Really? What we'll do is we'll talk about this question at the end of the session. ठीक है? So let's first study. इसके बारे में बाद में end में पूछना, we'll discuss. Fine? First let me understand your question at the end. ठीक है? Fine. You have classified this as living. This is living and this is non-living. This part is non-living. Correct? Now the question is, सवाल ये है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? What is the reason? कोई रीजन है? Let's try to figure it out. चैट पे बताओ कि रीजन क्या है? What is the reason? Why are you telling these 1, 2, 3 as living and 4, 5, 6 as non-living? क्यों बता रहे हो? Tell me on the chats. 3 non-living क्यों living क्यों है? And बाकी 3 non-living क्यों है? Come on, yes. I see almost more than 90 students are live with me right now. Let's make it 100, and let's
Make the legs also touch the number 100. Come on, do it. They cannot respire, digest, reproduce. Okay, locomotion, criteria, growth. The organism show intrinsic growth. Acha. I'm trying to read as many, chats as possible because they are moving. Movement. Acha. Growth. Will this define living? Will this define living? Come on, come on. Let's see. Yes, maza aa raha hai to see the chats. Great. Perfect. Okay, चलो. अब मैं वो एक्सपीरियंस देता हूं which is what I experienced at during my 11th standard. ठीक है. अब चलो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो. ठीक है, ठीक है. I got the points, I got the points. Come on, come on, I got the points. अब ध्यान से सुनो. देखो कैसे पढ़ना है ये मैं सिखा रहा हूं. ठीक. It's just not giving information. देखो ये सारे information तो आपको कोई भी बुक में you will get it in any book. But then why the teachers, why experts are required? Experts are required to show you the way, to show how to read the book, what to read between the lines is what I'm going to teach you. Okay? And if you understand that, exam crack karna is the easiest task. Trust me. ठीक है, चलो समझते हैं. तो सवाल ये है कि how do we decide something is living or it's non-living? ठीक है. Hey, good evening, Prem. Good to see you back. चलो. Yes, I see 100 students seeing me live. Great. So सवाल ये है कि कैसे बताएंगे living या non-living है, right? So the follow-through question comes up. How can we define life? Can you help me define life on the chats? Chat पे बताओ. Can you help me define life? What is life? How do you define life? इसको interactive करते हैं ना. प्रेम क्या बोल रहे हो सर? टुमारो इज माई फर्स्ट फाइनल टेस्ट सीरीज एंड दिस चैप्टर वाज कमिंग. कैन आई वॉच? हाँ हाँ बिल्कुल, वॉच इट एंड लेट मी टीच यू इन सच अ वे दैट कल जितने सारे सवाल आएंगे ना यू विल बी एबल टू आंसर. लेट्स डू इट. ठीक है प्रेम, कम ऑन, ध्यान से सुनना और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो rather than just learning things. Okay, चलो लेट मी टेल मी. लाइफ इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिज्म, इंट्रिंसिक ग्रोथ, कॉन्शियसनेस. ये तो बुक वाली चीजें बता रहे हो आप, ये तो बुक में है. Outcomes of metabolic reaction. Life has no definition, sir. Priyanshu, life has no definition. ठीक है, ठीक है. Life is the interaction of chemicals along with cellular organization. Nice. Outcomes of metabolic reaction. Outcomes of metabolic reaction. ठीक है. Reproduction, unique. और कुछ life cannot be defined. I think Sameer Bhagat is telling. Jyoti, what are you telling? अरे मैंने 15 का नेट. ज्योति देखो नेट तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, अदरवाइज दी सेशंस एटलीस्ट तो 1 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा, राइट? नहीं तो मज़ा कहाँ से आएगा, है ना? सो थोड़ा सा ज़्यादा नेट चाहिए आपको. प्लीज़ मैनेज विद दैट. टाइम पीरियड बिटवीन लाइफ एंड बर्थ. अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ डज नॉट हैव अ डिफाइंड डेफिनेशन. देयर आर सम क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच we can define life. Got it? Many of you were correct. Life को ऐसे characterize या तो define नहीं कर सकते, but based on certain criteria बोल सकते कि okay, this is called life. Fine? चलो. What is life? It is unique, complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. देखो कितना डिफिकल्ट डेफिनेशन है. इट्स सच अ डिफिकल्ट डेफिनेशन, आई कैन नॉट रिमेंबर. तो मैं क्या करता हूं, इसको समझ लेता हूं एंड देन राइट इट ऑन माई ओन वर्ड्स. राइट, लेट्स राइट. दिस इज यूनिक, ऑफ कोर्स इट्स यूनिक. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो सिर्फ मॉलिक्यूल्स से तो लाइफ नहीं बन सकता है, करेक्ट? एक सवाल करता हूं. I'll ask you a question. ध्यान से सुनना, सिर्फ चैट नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? सवाल ये है, देखो we are made up of biomolecules. Yes or no? चलो बताओ. We are made up of sir, which definition do you want? Very good that you pointed out. दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट? चलो. We are made up of biomolecules. Yes, the answer is yes. Everyone is telling yes. Correct. Perfect. Richa is telling yes, Neha is telling yes. Brilliant. अच्छा, तो
क्या मैं बायोमोलिक्यूल्स को लिविंग कह सकता हूं? कैन आई से बायोमोलिक्यूल्स इज लिविंग? बताओ, अब जवाब दो. द क्वेश्चन इज हियर, कैन आई से बायोमोलिक्यूल्स इज लिविंग? बाय द वे, आई डिड नॉट गेट मच लाइक्स, सेशन के लाइक थोड़ा बढ़ा दो. 60 देख रहा है, 100 कर दो एटलीस्ट, जल्दी. नो नो, यस सर, यस सर. प्रेम बोल रहे हो यस, बाकी लोग नो बोल रहे हो. नो 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 नो. ओके, परफेक्ट, ठीक है, जवाब तो दे दिया सर. स्टूडेंट का ये अच्छा है. एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, ठीक है, फाइन, करेक्ट. चलो, अब बात ये है कि आपने ये बोला, लेट मी कंफ्यूज यू अ बिट. यू सेड दैट वी आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बट बायोमोलिक्यूल्स लिविंग नहीं है. तो हम लोग लिविंग नहीं है क्या? Aren't we living organisms? We are living? Yes. You call cells as living. Yes, some of you are telling. Durjay, you are telling cells are living. But cells तो बायोमोलिक्यूल से बने हैं. पर बायोमोलिक्यूल्स को लिविंग क्यों नहीं कह सकते? But we are telling cells as living. This is the question. And answer it to me on the chat. Let's see who can answer it correctly. I repeat the question. Biomolecules make up the cells. Cells you're calling living, but biomolecules are not living. क्यों? जवाब दो. They perform functions so that their group are living. और अच्छा, ठीक है. I'll not tell you the correct answer right now. Let's see what my students understand till this point of time. Yes, they are living. Yes, sir. DPC Chavan. Omkar, yes. Riya Sagar, we are living due to the interaction between the biomolecules. Badhiya, Ayush Kumar, they perform functions together so that their group are living. अच्छा, ठीक है. I so like to see the chats. ऐसा लगता कि I so wish that you could have been just in front of me. पढ़ने में इतना मजा आता. Great. Biomolecules survive, but due to interaction between biomolecules, but sir, biomolecules cannot grow, reproduce, develop. Brilliant, सही. पर online classes नहीं, but they are not living to. अच्छा, ठीक है. चलो, let me give you the answer. Let me give you the answer. Look, biomolecules definitely make up the cells. But biomolecules on themselves, they are not living entities. They need to be together to make something perform or make it self-sustainable. So cell is self-sustainable. It can reproduce, it can grow. Biomolecules itself is not self-sustainable. So those are just chemicals which exist in nature. Now multiple such chemicals need to work together in synchronization to make something living, which is the cell. You got the point? Did you get the point? Did you understand? Yes? Deepman, you're coming to Bangalore. Okay. Yes, definitely you can, you can come and visit our office. Yes, definitely. We have a office in Bangalore. Please come and visit. Yes, 2023 aspirant भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So you got the point, right? My question, Jignesh is telling, please repeat. Yes, I'll repeat. Look, biomolecules are entities, or rather I would say chemicals, but they cannot self-sustain. They are not self-sustainable. What is a cell? A cell is a self-sustaining entity which can reproduce, which can grow, which can interact. Biomolecules can't do that. Right? Now, to make a cell, to make something which is called life, all these biomolecules should work in synchronization with each other. They should coordinate with each other. Then only something which is life will be formed. ठीक है? Got it? Screen blur हो रहा है. I think you are facing some internet connectivity issue. Jyoti, बस please check कर लो. Yes, they are not able to live independently. Correct. Very good. Very good. Fine. That is easy. Good. Chalo. Now, see the definition, okay? So basically, we are going to talk about these characteristic features: growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. Who guides that they work together? Again, Ayush, very good question. You know about the DNA? You know about the DNA, the nucleic acid, it's again a biomolecule. And what is going to be performed?
What are the molecules to be made? How are they going to interact? Everything is coded there in the nucleic acids. Fine? It's there in the nucleic acids. Yes, sir, can NEET 2024 watch it? Yes, definitely you can. Sanchit, please do watch it. 2024, 2023 aspirants, definitely you should watch this session. है ना? चलो फर्स्ट पढ़ते हैं ग्रोथ. देखो कैसे हमारे जो बेसिक परसेप्शन था, विल ट्राई टू ब्रेक इट टुडे. So biomolecule contains other. Yes, definitely. Biomolecules can control other biomolecules. In fact, they interact with each other. They can form new molecules. Right? Correct. Deoxyribonucleic acids. Okay. Sai Prasad, good. Does have some specific features, but not on the other hand. हाँ, correct. दुर्जय. So सब मिलके एक सेल बनता है. ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं. What is growth? Simple definition है. Growth is the increase in size, mass or height, and in fact number. Now bracket में क्या लिखा है ये पढ़ो. In case of unicellular organisms of an individual, that is growth. This occurs by cell division. अब यहाँ पे confusion है. You understood growth, right? यहाँ पे confusion है. ध्यान से सुनो. ठीक? I'm talking about growth is increase in number, है ना? बट ग्रोथ अगेन एक ना रिलेटेबल टर्म है, रिलेटिव टर्म है. क्यों? नाउ एम आई ग्रोइंग? विल यू कॉल, विल यू से दैट आई एम ग्रोइंग और यू रादर यू आर ग्रोइंग? लेट्स अंडरस्टैंड इट. आई एम ग्रोइंग? टेल मी ऑन द चैट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज एम आई ग्रोइंग? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ बाद में आएंगे. Am I growing? No, sir, you are not. I am not growing. Okay, ठीक है. Sanjit is telling I am not growing. Okay. Mr. Roy is telling Nana. Okay. No. Some are telling yes. Ayush is telling yes. Ankit, externally you, yes. Okay. So I think 60-70% is telling yes, I am growing. ठीक है. बाकी लोग बोलो नहीं, you are not. I am not growing. So now first let me talk to the folks. Let me talk to my students who are telling yes, I am not growing. Let me first talk to them who are telling I am not growing. Batao, why do you say so? Why am I not growing? Batao. So you're the same. You are now, but you are because you did not same when you were 5. Okay, ठीक है. Why do you say that I am not growing? Come on, tell me. Batao. Let's understand it. Very good. In fact, I'm not telling that you are incorrect or correct. Let's try to analyze it. जो भी, because we are from the scientific community, right? So whatever we will say, there should be a basis. तुक्का नहीं मारना है ना? We will not do any guesswork. Mass decrease हो गया सर मेरा. क्यों मिस्टर रॉय? मास क्यों डिक्रीज हो गया तुम्हारा? खाना खा नहीं रहे हो क्या? There is no visible increase in height. So you are telling I am not growing. Okay, logical. I agree to it. I accept it. Your size is fixed. Okay, I accept it. Fine. Your age timeline is over. What do you mean? Priyanshu, what are you telling? Your age timeline is over. मेरा timeline खत्म हो गया. Timeline नहीं खत्म हो गया. अभी मैं जिंदा हूँ. So yes, if you tell in terms of growth, हाँ मेरा height अभी बढ़ नहीं रहा है. Correct? But let me now, Ankit is also laughing. Now let me talk to my students who told that I am growing. What do you mean by this? Come on, tell me. What do you mean by when you say that I am growing? Batao. Height and number is not increase. Okay. So you have reached adulthood, so your bones are ossified. Okay. बड़े important and difficult terms. आसानी से पढ़ेंगे हम. आसान शब्द यूज करेंगे. Cells are just repairing. Okay, ठीक है. Dividing. Cell growth. Mass increase. I'm aging. ठीक है. No increase. Increase in size. Cell growth. Repairing other cells. My height is increased day by day. The increase in अच्छा ठीक है. But sir, the cells in your body are dividing rapidly, so you're growing. Okay.
अब देखो, why did I ask this question? I told you what starting में, relative term. ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है कि ग्रोथ यही है, कंट्रोवर्सीज है. You can, we can go on a deep debate and discuss this. This is one of the controversies. Unicellular organism में you can say increase in number is growth as well as division. Correct? ग्रोथ में इंक्रीज इन साइज या मास, हाइट या नंबर हो सकता है. नाउ आई एम नॉट ग्रोइंग इन हाइट, बट माई सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग. यू नो वाई? सो दैट इट कैन रिप्लेस द डेड सेल्स. न्यू सेल्स जहां पे भी चाहिए, कोई वुंड हो गया, माई सेल्स नीड टू रिपेयर इट सेल्फ, न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड. एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ टाइम. ठीक है? व्हेन दे डाई इट हैज टू बी रिप्लेस्ड. तो in one sense, if you compare height as a characteristic feature to define growth, I am not growing. But my hair is growing, my nails are growing, right? I do a bit of exercise, so my muscles are growing. Tab kya bologe? Am I growing or not growing? If I eat a lot of fats, I'll grow fat. Am I growing then? Yes, I'm growing. So, the point is, it's a relatable term. So these are the characteristics which can be taken into consideration to talk about growth, है ना? So growth कब हो रहा है? Sir, you are shedding skin constantly. Yes. इसमें questions आए थे. Yes, correct. दुर्जय. Sir, age has timeline but muscle not why. समझा नहीं? I did not get. Sir, age has timeline but muscle not why. I did not get your question, my dear. So प्रियांशु एक बार थोड़ा simplify करके सवाल पूछो. हीलिंग एंड रिपेयरिंग, करेक्ट. सो देखो, सेल डिविजन होके क्या हो रहा है? नया सेल्स बन रहा है. जितने सारे नए सेल्स बनेंगे, हाइट में, थिकनेस में ग्रो हो सकता है. सो दैट कैन बी टर्म्ड एज ग्रोथ. बट कैन यू टेल इफ समथिंग इज ग्रोइंग? कैन यू टेल दैट यस, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? गिव मी द आंसर. इफ समथिंग इज ग्रोइंग, चलो साइज या मास या नंबर या हाइट, किसी पे भी अगर ग्रो हो रहा है, कैन यू टेल, विल यू टेल रादर दैट particular thing or an organism is growing or it is living organism? Can you tell? No. Okay. Why? No. Example, rock. No, you know it. Know it well. Great. हम लोग नहीं कह सकते. हाँ, correct. Very good, Priya. Sachin, Ritu, साकिर, राज पटेल, रिया, नो. माउंटेन, अच्छा, आप लोगों को पता है ये चीज. ग्रेट, बढ़िया. चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. ग्रोथ, पहली बात तो है, ग्रोथ को पढ़ते हैं. क्या क्या टाइप ऑफ ग्रोथ हो सकता है? एक तो है डेफिनाइट ग्रोथ, एक इनडेफिनाइट ग्रोथ. डेफिनाइट मतलब वो ग्रोथ, because your compressed sponge that will grow in size when we release the pressure, so growth cannot be defined. Very good. Who is this? Madleen 05. I'm so sorry, I'm not able to pronounce your name. Madneel, maybe, yes. So right, that's again an example. So growth defining characteristic nahi hai. Now definite growth, what does this mean? लिमिटेड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. देखो, ग्रो होके इसके बाद और ग्रोथ नहीं होने वाला है. सो वी डू नॉट ग्रो थ्रू आउट आवर लाइफ, बट प्लांट्स डू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. सो इट्स अ टाइप ऑफ इंडेफिनाइट ग्रोथ, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ इंडेफिनाइट ग्रोथ, राइट? ओके. सो अब तक जितना मैंने पढ़ाया, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, गिव मी एन ऑनेस्ट ओपिनियन. क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? येस और नो, राइट? टेल मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, कैसे कुछ चेंज करना है, कुछ तरीका चेंज करना है, स्पीड चेंज करना है, जो भी. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, मजा आ रहा है? डू यू थिंक इफ आई टीच लाइक दिस यू विल बी एबल टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन एंड मेक मी प्राउड? कैन यू डू दिस? क्रिस्टल क्लियर, वेरी 100% क्लियर, एंजॉइंग. टेक इट फास्ट. थोड़ा सा आगे जाके जल्दी करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा आगे जाके जल्दी करेंगे बिकॉज दिस मजा आ रहा है, समझ आ रहा है. फाइन, परफेक्ट, ब्रिलियंट, जस्ट लव इट.
ठीक है, अच्छा लग रहा है। साकी, नाम ले लिया मैंने, ठीक है, साकी। ग्रेट, मजा आ रहा है। नीट में फोड़ देंगे अंकित, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइस। अब एक सवाल ये है, आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस ऑलरेडी। The height of Mount Everest increases by approximately 2 centimeters every year. 2 सेंटीमीटर हर साल माउंट एवरेस्ट इज ग्रोइंग। इट्स अ यंग फोल्ड माउंटेन। कैसे ग्रो होता है पता है? इट्स बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग प्रेशर। धीरे धीरे वो ग्रो होते रहते हैं, राइट? सो माउंट एवरेस्ट भी तो ग्रो हो रहा है, बट डू यू कॉल माउंट एवरेस्ट एज लिविंग? नो सर, वी डोंट कॉल माउंट एवरेस्ट एज लिविंग, है ना? फिलहाल के लिए इतना समझ लो। बट हाउ सचिन, आई टोल्ड यू माउंट एवरेस्ट क्या होता है ना, बिकॉज if you have studied in physics and geography a bit, right, there's tremendous pressure. If you study जैसे कैसे continent form हुआ है, कैसे ये mountains form हुआ है, it wants, because of these volcanic eruptions, a lot of forces, lot of pressure, अगर सोचो this is Mount Everest, अगर हर तरफ से एक प्रेशर आता रहता है तो ग्रोइंग एंड क्या है? ऊपर ना, वो ग्रो करेगा, राइट? तो ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, फाइन, करेक्ट। एंड इन फैक्ट मैं दूसरा बात बताता हूं, चलो प्रेशर छोड़ो, ग्लेशियर्स तो बढ़ते हैं, मोर एंड मोर आइस डिपॉजिट, स्नो डिपॉजिट तो बढ़ता जाएगा, है या नहीं? सिंपल सी बात है, करेक्ट? दैट्स सिंपल, फाइन। रॉक्स, इफ यू टेल रॉक्स, आई वुड नॉट से always grow in height or size, it can change because of again pressure. सोचो टूट गया तो दो हो गया ना, साइज तो चेंज हो गया, राइट? देयर इज अ चेंज इन देयर साइज। सो हमेशा ग्रोथ को ना हाइट से रिलेट मत करना, डोंट रिलेट ग्रोथ विथ हाइट ऑलवेज। नाउ अब ग्रोथ, आई कैन टॉक अबाउट ग्रोथ इन टू टर्म्स। एक तो है एक्सट्रिंसिक, एक है इंट्रिंसिक। देखो एक्सट्रिंसिक मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, दिस अकर्स मोस्टली इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाहर से स्नो डिपॉजिट हुआ, सैंड ड्यून्स बढ़ते रहते हैं, राइट? एक्सट्रिंसिक, बाहर से ग्रोथ हो रहा है, बट सी अब डेवलपिंग एम्ब्रियो, बेबी, दिस आर इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रो होते हैं, है ना? अंदर से ग्रो होते हैं, करेक्ट? फाइन, गॉट इट? So I can say whatever we have studied that growth is not a defining property of living organisms. Growth, कोई भी चीज में growth हो रहा है तो I cannot say this is living. Extrinsic is exhibited by non-living matter. Intrinsic is the growth that takes place inside the body of the organism. So growth is not a characteristic, defining characteristic. So growth is definitely a characteristic feature, but it is not a defining characteristic property of living organisms. Fine? Very, very good. चलो आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब क्या है? परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज, जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? ग्रोथ परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल है। डेवलपमेंट क्या है? वो सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस, जितने सारे चेंजेस है उसका सम टोटल, जो कि एक ऑर्गन में, एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है इन इट्स लाइफ टाइम। सॉरी, दिस में अकर इन अ सेल, एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ऑर्गन में हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, जैसे चेंज इन साइज, सॉरी, ड्राई वेट, मास और नंबर, ठीक है? सो दीज आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू अंडरस्टूड? इट इज द सम टोटल ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, सब मिला के। इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। देखो, इंटरनल ग्रोथ इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ। सो इंटरनल ग्रोथ तो कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रोथ। तो फीचर क्या है तुम्हारा? ग्रोथ, दैट यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। सर आप तो जूलॉजी पढ़ाते हो ना? बेटा मैं तो पूरा बायोलॉजी पढ़ा सकता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? और ये जो चैप्टर्स, ये आपका कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, सो देयर इज अ डेफिनेट, कुछ
कोचिंग सेंटर्स, कुछ बुक्स में डेफिनेशन डिवीजन है कि ये बॉटनी में यूज किया गया है, बट दैट्स ओके, राइट? आपको समझने का योर मेन मोटो शुड बी अंडरस्टैंडिंग। सर ह्यूमन में ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट? दोनों, दोनों, सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस, बहुत सब कुछ, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो उसको एक साथ डेवलपमेंट कहते हैं, राइट? लाइक अ चाइल्ड डेवलप्स, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट? गॉट इट? अवेक सर, लेट हो गए क्या? कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई थिंक 4 more likes to be left to touch the 100, a century likes. So put it. Any question? Metabolism is the characteristic feature. आएंगे, मेटाबॉलिज्म तक आएंगे। डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ, डेवलपमेंट यस, ऑल द चेंजेस। देखो ग्रोथ में ये सारे चेंजेस है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल दीज चेंजेस, ठीक है ना? चले आगे, आगे बढ़े। नाउ 3 processes are involved in growth: cell division, cell enlargement and secretion of the apoplasmic substances. ठीक है, apoplasmic substances, cell division, cell enlargement and secretion of apoplasmic substances. Yes, century likes. Great. चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले देखो ये क्या दिख रहा है, what do you see here? क्या दिख रहा है? ठीक है, जो भी देखा है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, what do you see again? What do you see again? है ना? यहां पे देखो, what do you see again? So what do you guess? What is the characteristic feature we are going to talk about? अडी सचिन सर के सेशंस कुछ दूसरे दिन में है। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी पोस्ट, फॉलो आवर चैनल, यू विल बी एबल टू गेट टू नो व्हेन सचिन सर इज गोइंग टू कम लाइव विथ यू, है ना? सो व्हाट? यस, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बता दो, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? बुक से मत बताना, समझ के बताना। टेल मी, इज रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग फीचर? टाइम टेबल संचित, व्हाट यू विल, संचित राइट? हाँ संचित, टाइम टेबल मिल जाएगा कहां पे? कम्युनिटी पोस्ट पे, राइट? सो प्लीज गो एंड सी द अपकमिंग वीडियोस, क्या क्या वीडियोस आने वाला है, पूरा टाइम टेबल वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, यू नो। And there's a big Aakash BYJU'S team which is always working hard day and night so that आपका benefit हो, you crack the examination and you can make us proud. ठीक है? So follow that. चलो चलो आगे बढ़ते हैं। Reproduction. Many of you are telling no, not at all. कुछ लोग संतोष is telling yes, no sir. Arinator, क्या नाम है? I don't know. You're telling yes. No sir, not at all. Growth and development. Mule, अच्छा. Saki, thank you for the comment. Liger, no sir. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Wait, what? No, not alone. Even a Xerox machine reproduces papers, but organisms can reproduce by itself. That is a criteria. I just love this. वेरी गुड। इनफैक्ट मैंने कभी ये वाला एग्जाम्पल मैंने यूज नहीं किया, यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। नाइस, दैट्स अ नाइस एनालॉजी, वेरी गुड। वी कैन कॉपी इट, वी आर मेकिंग कॉपीज, राइट? कॉपी से तो बन रहा है ना? नाइस नाइस, गुड एनालॉजी। ऐसे पढ़ोगे ना, यू विल नेवर एवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स, यू विल नेवर एवर मिसअंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ऐसे ही पढ़ना है। वेरी गुड, इंप्रेस्ड। चलो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, राइट? व्हाट इज कॉमन इन दिस पिक्चर्स इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिमिलर काइंड। सिमिलर काइंड के इंडिविजुअल जब बनते हैं, राइट? गिविंग बर्थ टू यंग वंस। डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। Yes, definitely. It distinguishes living from non-living. Not essential for survival of individuals. Is it essential for survival of individuals? No. Reproduction, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। Then why do they reproduce? So that the species can be maintained on Earth. So that उनके generations आगे बढ़ते रहे. They don't go extinct.
ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज इज मेंटेन, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, राइट। सेक्सुअल, you know about it, involves fusion of gametes and it involves two parents, right, male and female. Offspring varies genetically from the parents, so it's never ever that the offsprings are identical to the parents. It's sexual reproduction, we'll study about it in the cell division chapter. आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे कि कैसे म्यूटेशंस हो सकते हैं, कैसे चेंजेस आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। सो व्हेन द लाइव ऑफ क्लास 9 कम, बेटा संदीप, टू बी वेरी ऑनेस्ट 9 के एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे अभी पता नहीं है, यू जस्ट गो एंड प्लीज सी द चैनल, आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है संदीप, गॉट द पॉइंट, गॉट योर क्वेरीज क्लैरिफाइड इंस्टेड ऑफ कंज्यूम्स एनर्जी, ठीक है, करेक्ट। हाँ पवन, करेक्ट पवन। सो व्हाट शी आई थिंक हु मेंट, सो व्हाट यू नो दैट स्टूडेंट ट्राई टू मीन इज रिप्रोडक्शन को कॉपी कह सकते हैं, कभी कभी हम कॉपी जैसे बोल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल पवन, इफ यू टॉक अबाउट, यस अविक, बाय बाय, केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू सी, आई विल सी यू लेटर, राइट। हाँ पवन, कमिंग टू पवन, वेरी गुड पॉइंट। बट अगर एक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करके क्या कर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया बना रहा है, तो 2 बैक्टीरिया राइट नाउ, करेक्ट। सो ये कॉपी हो गया, अ सेल कॉपीज इटसेल्फ, यू कैन से दैट। अभी देखो, वी आर नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट डिटेल डेफिनेशन, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू कैन से कि हाँ कॉपी तो हो रहा है ना। बट हाँ, अब क्या पेपर से पेपर बना, नहीं, बट वो जो मटेरियल है वो तो कॉपी कर ही रहे हैं, है ना। एक पेपर से दूसरे पेपर में डाल रहे हो तो इस दूसरे पेपर से तीसरा पेपर, सो कॉपिंग, द वर्ड इज कॉपिंग हियर विच वी कैन फोकस ऑन, ठीक है। मे बी जेरोक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट एनालॉजी, बट यस कॉपिंग वर्ड कैन बी अ रिलेटेबल एनालॉजी। पवन, गॉट इट पवन? सर वेयर कैन आई गेट द नोट्स ऑफ दिस सेशन? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आफ्टर द सेशन इज डन, है ना। सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा? अक्षवी, राइट बेटा, अभी तो शुरू किया है सिलेबस तो बहुत बाकी है, पढ़ते जाओ, पता लग जाएगा कब तक खत्म होगा, है ना। चलो, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल फीमेल अलग से नहीं चाहिए यहाँ पे। ऑफस्प्रिंग्स नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, राइट। यहाँ पे क्योंकि यू नो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें नहीं होता है, तो what will happen, it's like this is asexual reproduction. So genetically different organisms नहीं प्रोड्यूस होते, सिमिलर रहते with the parents, identical to the parents in fact. Now the question is, do all organisms reproduce? No sir, all organisms do not reproduce. See, reproduction, let's study it. Unicellular organisms reproduction is synonymous with growth, that is increase in the number of cells. यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होते हैं कुछ बच्चों के, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यू कैन से रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ synonymous, not in multicellular organism. Not very clear with the usage of the terms growth and reproduction. So I told you relatable and relative term है ना. So all organisms cannot reproduce. And see here an example, many organisms like the mule, sterile worker bees, infertile human couples जो कि infertile है, they will also not be able to reproduce. So hence not all inclusive defining features of life. So it's not an inclusive, all inclusive defining feature of life. Definitely living organisms can reproduce, but this is not the defining feature of life. Understood? Yes, mules do not reproduce. Tejashwini, 6 PM देखो बाकी लाइव भी हो रहा है, राइट. सो 7 एक्चुअली वर्क्स विथ माई टाइम टेबल. सो 7 अच्छा रहता है, आपके भी क्लासेस वगैरह हो जाता है, स्कूल वगैरह हो जाता है, राइट. सो देन आप भी आराम से देख सकते हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. द क्वेश्चन इज, डू यू नो अबाउट द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी? केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं. टेल मी. हमारे बॉडी में टैक्सोनॉमी कैटेगरी, बेटा ये पढ़ लेंगे, वी विल स्टडी अबाउट इट. वेट, थोड़ा आराम से.
टेल मी, केमिकल रिएक्शंस होते हैं? अच्छा, कौन सा रिएक्शन? एक रिएक्शन बताओ तो, क्या रिएक्शन होता है? टेल मी वन रिएक्शन, टेल मी वन रिएक्शन दैट यू नो अबाउट, जो कि हमारे बॉडी में हो रहा है. लेट मी सी व्हाट माय स्टूडेंट्स नो अबाउट रिएक्शंस इन आवर बॉडी. मेटाबॉलिज्म ठीक है यार, ये तो बुक का डेफिनेशन है. कोई एक रिएक्शन बताओ ना जो हमारे बॉडी में हो रहा है. ग्लाइकोलिसिस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बढ़िया. ग्लाइकोलिसिस, नाइस. ठीक है. कैटाबॉलिज्म, डाइजेशन, breakdown of carbohydrate by amylase enzyme, enzymatic, aerobic respiration. wow, अब निकल रहा है ना आपकी नॉलेज. very good, come on, keep doing. anabolism, enzymes, gastric. okay, सही. so in fact अगर मैं कहूं कि we are alive because of these chemical reactions. हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड millions and millions of chemical reactions are occurring and that keeps us alive. अब पिछले जो 45 minutes से मैं बोले जा रहा हूं, it is taking a lot of energy from my body. How is that energy produced? सुबह से जो मैंने खाया, right, whatever I have consumed as food, that has to be broken down so that energy can be released, so that I can conduct these live sessions. So every microsecond, in fact, n number of reactions are happening in our body, and that's nothing but metabolism. So what is metabolism? Metabolism, it's a sum total of all the chemical reactions which is happening in your body. Metabolism is the sum total of all, कोई एक reaction नहीं, sum total of all the reactions, chemical reactions that is occurring in your body. ठीक है? Clear? What you have eaten, sir? Okay. अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो फिर हाँ, मैंने वैसे पनीर की सब्जी खाया मैंने. मास्टर टीचर इन आकाश बायजूस लाइफ. सर, you were the master. Yes, I have been teaching into the Aakash BYJU'S app also, right? You will see a lot of, if you take the subscription, if you take our app, you'll see a lot of videos there. You can see there, right? Hello Pushpendu Sir, I'm a BYJU'S student, so your live class in the app. तो बेटा इधर तो आ रहा हूं ना ऑनलाइन, राइट? तो इंसान तो मैं एक हूं, हर जगह कैसे प्रेजेंट हो जाऊं, राइट? सो वेर एवर आई एम गेटिंग सम स्पेस, सम गैप, थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू. जहां पे भी आई एम ट्राइंग टू, जहां पे भी थोड़ा टाइम मिल जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू स्पेंड दैट विथ यू सो दैट आपका नीट क्रैक हो जाए. बस यही चाहते हैं, और आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, राइट? Jignesh, anything about the app, anything about subscription, anything you wish to ask, please contact. Just go to our website. There will be a lot of email IDs, there will be contact numbers. आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, राइट? Rianshi is telling, I can make your clone, sir. I so wish, बचपन में जब मैं पढ़ता था, in fact first time when I thought I'll be, when I studied about cloning, इनफैक्ट जब मैं क्लोनिंग कर रहा था लैब में बैक्टीरिया के, यू आई टू थिंक कि क्या काश अगर मैं अपना क्लोन कर लेता तो, है ना? सो प्रियांशु, ट्राई करो. इफ यू कम अप विथ समथिंग, आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू आउट देयर. करना कभी, ट्राई इट आउट. हाउ लॉन्ग? आई थिंक अ बिट मोर, आधा घंटा और तो लगेगा, 30 minutes more. Constructive metabolism. I'm talking about anabolism right now. It's constructive metabolism, which will include building up of molecules. Building up reactions कहते हैं anabolism. कैसे याद करोगे बोलो तो? Anabolism and catabolism. I remember like this. Anabolism and catabolism. I remember like catabolism is cata, cut. Cata से cut को मैं इन्वॉल्व करता हूं. अगर कट हो गया तो छोटा हो जाएगा. So, catabolism is breakdown reaction. Anabolism will be the opposite, which is building up reactions. Got it? हाँ, correct, Ritu. Very good. शिखा, nice. संचित ने अपने नाम पे पहले ही एम्स दिल्ली जोड़ दिया. Very good. I like it.
that will remind you always that yes, that is the target. Involve synthesis of complex substances, बड़े बड़े complex substances बनाने के लिए, जैसे glucose बनाना with the process, by the process of photosynthesis. That's a catabolic reactions. Why and how metabolism occur? ये तो बहुत broad spectrum. Why and how metabolism occur? Broad spectrum answer है, but I'll try to make it brief. Metabolism in our body, बॉडी के अंदर हर वक्त कोई ना कोई चीज को तोड़ना पड़ रहा है, कोई ना कोई चीज को बनाना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है. सो ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस टुगेदर इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. फाइन, गॉट इट? सो समझ गए? कैटाबॉलिज्म पढ़ लेते. डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन, ठीक है, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एटसेट्रा. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ metabolism, I told you, is the sum total of all the biochemical reactions which is occurring in our body, which involves catabolism and anabolism. Sir, in catabolism, what is breakdown? Catabolism मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को अगर तोड़ना पड़ता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ रहा है. वी आर मेकिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी कैन बी जनरेटेड. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस अगर आप पढ़ोगे तो ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुवेट बनाया जाता है. विल स्टडी अबाउट दैट लेटर. हाँ, मेटाबॉलिज्म इज डेफिनेटली अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ अब ध्यान से सुनो. मेटाबॉलिज्म को फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, आई एम टेलिंग metabolism is a defining property of living organisms. But what was metabolism? Nothing but chemical reactions. है ना? है ना? तो अब सवाल करता हूं. I'll ask you a question. Come on. इसका जवाब चैट में चाहिए मुझे. This question is, yes, 2 molecules of pyruvic acid. Question is, if I perform a chemical reaction in a test tube, can't I call it as a living or a non-living reaction? Can't I call it as living? Tell me. Sir, NCERT line and isolated metabolic reaction non-living or non? हाँ, यही तो सवाल आ गया. चलो जवाब दो आप. संचित, yes, that is the question I've asked. चलो let's discuss. Let's see, डिस्कस करते. मैं जवाब नहीं दूंगा, है ना. Let's discuss. Let's see what you think about it. देखो, science is all about your thought process, what you think, how you apply. बताओ. Sir, if you put, पवन क्या बोल रहे हैं? Sir, if you put 2 chemicals in pot, they will also react and perform reaction. Yes, तो फिर क्या उसको living कहूंगा मैं? सवाल ये है. Yes, of course not. No, as it is one single reaction, not sum total of. Oh, okay. अगर सोचो 2-3 reaction एक साथ कर दूं, तो क्या होगा? Outside the body, not living, sir. ठीक है, it's a living but non-living reaction. Yes, of course. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, है ना. Tell me. No, yes, I did not get a very satisfactory answer. I did not get a satisfactory answer. थोड़ा सा. I think no. Sir, reactions are living but non-living. Non-living thing. अच्छा. Neither living nor non-living. Reaction is living but tube is non-living. संचित ये तो मजेदार आंसर दिया. रिएक्शन इज लिविंग एंड बट ट्यूब इज नॉन लिविंग, हेंस मिड लाइन. क्या बेटा, व्हाट इज मिड लाइन? अब मुझे बताओ व्हाट इज मिड लाइन. मिड लाइन क्या है? मतलब लिविंग भी हो सकता है, आज लिविंग है कल लिविंग नहीं. ऐसा है क्या? ऐसा कभी थोड़ी हो सकता है ना. चलो बात करते हैं. चलो, नाइस. रिएक्शंस इन अ टेस्ट ट्यूब or in a lab is nothing but isolated chemical reactions जो कि cell free system में हो रहा है, and I can call them as living reactions. Why? Because those are the reactions which is happening in our body but not as living thing. वो सिर्फ वो reaction एक living thing नहीं है, वो living organism नहीं है. It cannot self sustain. What is required? All the chemical reactions in a confined boundary, then it becomes a cell and that is living. और एक बार
ये समझ में आया ना? सिर्फ रिएक्शन से नहीं होगा बेटा। देन आप तो ये सवाल पूछ सकते हो कि सर सारे रिएक्शन से टेस्ट ट्यूब में कर देते। पहली बात तो होगा नहीं ऐसे। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन के अपने कंडीशंस होते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स होते, टेम्परेचर, प्रेशर, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल सब अलग होता है, और वो एक कन्फाइंड बाउंड्री में होना जरूरी है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा ना। रिएक्शन ए करते वक्त रिएक्शन ई हो जाएगा, राइट? सो यू कैन कॉल दीज रिएक्शंस एज लिविंग रिएक्शंस बट नॉट एज लिविंग थिंग। समझ में आया? वैभव, यू हैव अ क्वेश्चन, पूछो, सवाल पूछो। Do not affect the test tube condition, but the biochemical reactions in our body affect our conditions. Yes, SM, correct. Atul, okay, if you have told the same thing, that's great. I have told the same thing. Atul, sorry, I think I missed your point. If you have told that, very good. अतुल गुस्सा हो गए? क्या हो गया? इतना जल्दी गुस्सा नहीं हो सकते, है ना? We need cellular organization, isn't it? Yes, beta. Sanchit, very good. We need, I'm telling you, confined boundaries, cellular organization required है. Answer my question, the last question, my question. साकी, लास्ट एट द सेशन, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि मैं पानी तो अभी पी रहा हूँ कि पानी पीने के बाद पसीना आता है। आई रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि अभी मैं पी रहा था पानी, राइट? मुझे पसीना तो आया नहीं। सो साकी, व्हाट विल डू, एंड में पूछते हैं, ठीक है? एंड में बात करते हैं, है ना? चलो 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 चलो। सर, आई एम 24 टू एस्पिरेंट, कैन आई वॉच दिस? यस, यू शुड वॉच इट, डेफिनेटली यू शुड वॉच इट। जिसमें रिएक्शन हो रही है वो भी लिविंग होना चाहिए। अच्छा सर, इफ यू टेक 2 लिविंग सेल्स डूइंग ऑल रिएक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म, देन व्हाट शुड बी कॉल्ड देम? मतलब 2 लिविंग सेल ले रहे हो एंड डूइंग ऑल रिएक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म। अगर सेल ले रहे हो तो दोनों ही, दिस इज वन लाइफ, दिस इज वन लिविंग सेल, दिस इज वन लिविंग सेल, दोनों ही सेपरेटली लिविंग सेल कह सकते हो, है ना? सेल फ्री मीन्स सेल के बाहर, टेस्ट ट्यूब में। नाउ डू यू नो व्हाई लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म? लेट्स सी। अब कोई, समवन वाज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, अब बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, इट बिकम्स अ टिश्यू, करेक्ट। अब देखो, differentiation of a body into smaller units and subunits arranged in an orderly manner. We are made up of cells which make up the tissue, which again make up the organ, which make up the organ system, and hence ultimately the organism, है ना? ये organism then we call an organism. इसके पहले नहीं, इसके पहले अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग टिश्यू से, अलग अलग सेल से, जब सब सिंक्रोनसली काम करेंगे तब एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। गॉट इट? फाइन। तो इसके बाद वी शुड स्टडी सेल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सी। ऑर्गेनल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। यू नो दिस? नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनल एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये तो समझ में आ गया, आई जस्ट एक्सप्लेन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। फाइन। नाउ हैव यू ऑब्जर्व दिस? लेट्स सी। Heliophilic sunflower, what does this mean? In fact, in my house, what is your name? Maham. I've taken your name. I hope you're happy since I took your name. So great. चलो इसके बारे में बढ़ते हैं। Heliophilic, आपने देखा होगा। In fact, in my balcony, there are few sunflowers. Trust me, if I just observe them, सुबह जिस तरफ से सूरज आता है, right? The sun rays. It starts from there and throughout the day it keeps moving based on the location or position of the sun. ऐसे है, my balcony is placed in such a way कि east से ऐसे west जब जाते हैं तो I see the sunflower moving like this, and then it just waits. Next day again I'll see it here. Amazing. ये वाला देखा है? See this. I so liked this particular GIF, ऐसे नहीं करते, but that is just for a fun purpose. Just see it. ये reflex कभी try किया है? Yesterday in the office, me and some of my colleagues, we were trying this.
सो ये रिफ्लेक्स काम करता है, फॉर फ्यू आई हैव सीन, जैसे मेरा ये रिफ्लेक्स थोड़ा सा स्लो है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फोक्स जिनके लिए ये रिफ्लेक्स काफी इंस्टेंट है और काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, देख पाओगे आप। ओमकार, और इफ यू लाइक, इनफैक्ट पता है व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस आई ऑल्सो हैड द सेम रिएक्शन, मजा आ गया ये देख के एक्चुअली, राइट, वेरी गुड, एंड दिस इज ऑफ कोर्स आई शुड थैंक माई टीम, एफर्ट फ्रॉम माई टीम, राइट. So, these are nothing but what? Consciousness. Consciousness. Yes, consciousness is the term. Correct. No, Ankit, I did not hit that person because मेरा reflex बहुत छोटा सा, थोड़ा सा आता है. In fact, we were trying to figure out कि मेरा reflex proper आ क्यों नहीं रहा है. So, maybe it depends क्योंकि I used to play football, बहुत सारे चोट लगी हुई है उधर, हो सकता है, I don't know. Never try to analyze it, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट्स नथिंग बट अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ पॉइंटेड छू लेता हूं या तो गर्म छू लेता हूं, आई जस्ट क्विकली रिमूव माई हैंड, है ना. सो दीज आर कॉन्शियसनेस. ये सिर्फ वी, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, दे ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली, राइट. लाइट, gravity, so these can work as stimulus. They say touch me not plant, for them touch is a stimulus. Fine. So stimulus are perceived by the sense organs. Visible change or reactions will occur in the organism that will produce a result of applied stimulus, which is called nothing but the response. Differentiation. Acha, differentiation. What is differentiation? I'll quickly explain. Reaction of metabolism characteristics. Can do UPSC, whoever you are, ask this question a bit later ना, क्योंकि वो point चला गया है, but I want to answer this. I'll answer this question. Sorry, I missed it. Differentiation, yes. Differentiation मतलब कुछ नहीं, एक cell when it divides and then it matures to form or perform specific function. That's the differentiation. Detail में पढ़ेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं. Consciousness is definitely a defining property of living beings. जो नॉन लिविंग है वो कॉन्शियसनेस नहीं है. दे आर नॉट कॉन्शियस, दे आर नॉट कॉन्शियस. पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है. ओके, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. 2022 के बारे में जो भी अपडेट्स आता है ना, सो वी डू पोस्ट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. प्लीज फॉलो दैट. नाउ आई हैव एन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन, एंड हियर इट इज. अ पर्सन इन कोमा इज लिविंग और नॉन लिविंग? लेट्स डिस्कस. योर नेम इज दिव्या. दिव्या, थोड़ा सा एंड में क्वेश्चन, ये सवाल पूछो बेटा प्लीज. वी विल डिस्कस इट. रोबोट्स आर कॉन्शियस और नॉट? नो, दे आर नॉट कॉन्शियस. दे आर कोडेड. Okay, they have coded algorithms. अगर थोड़ा सा उस algorithm के आजू बाजू कुछ हो जाता है, they will not be able to respond. So you can't call them conscious. Got it? अच्छा, living. अच्छा, many of you are calling it living. What is the when drinking water पसीना आता है? Okay. Half died, living, non-living. Palak, brain is working or not in coma. Half died, living. अच्छा, हाँ, पता है ये एक controversial statement है. In fact, and in fact, till date, scientists are trying to figure out what should we actually refer to, because this is a state where a patient has no self consciousness. अभी तो पढ़ा ना कि consciousness is a defining feature. The patient does not have self consciousness and is merely supported by machines, है ना. कभी कभी कोमा से वापस आ सकते हैं, they can revive back to a normal condition, and most of the times they do not. वैसे ही रहते हैं, right? They show few symbols, signs of life, and rest you'll feel the body is dead. तो इस तरीके से वो मशीन्स के हेल्प से इट स्टेज, द बॉडी स्टेज अलाइव. इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट इन सच केसेस एज लिविंग और नॉन लिविंग बिकॉज दे शो फीचर्स of both living and non-living too. So
सो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, थिंक अबाउट इट, दे आर ब्रेन डेड. यस, करेक्ट, दे आर ब्रेन डेड. सो वही चीजें हैं. एक्सेप्शन, यस, बट यू नो just try to think about it. I have been thinking about this a lot. क्लास के बाद भी एक बार सोचो इसके बारे में and see if you can come up with some answer. And after the session is done, chat पे आपस में discuss करो, because if you wish to be in science, you have to discuss, you have to brainstorm ideas. Ideas अकेले नहीं होता है. ऐसे कोई भी डिस्कवरी ऐसा नहीं होता है कि हाँ अकेले हो गया, कोई हेल्प बिना लेके हो गया. हाँ, काफी डिस्कवरीज, काफी इन्वेंशंस होते हैं, बट इट कैन टेक अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑल टुगेदर, वेरी प्रोडक्टिव फॉर्म, इफ मेनी ideas can be collaborated together. Okay, so that is it for today's session. Let me take the questions that you have. अब पूछो जो सवाल पूछना था, which I could not discuss. I'll try to discuss it here. I hope you have liked the session. अच्छा, पहले मैं एक बार पूछ लेता हूं. पहला सेशन हो गया. This is the first session. Many of the students have done it with me. The first session. Did you like the session? Give me an honest opinion if you have liked the session. Hit the like button if you have liked the session and let me know कि आपको मजा आया, अच्छा लगा. Would you like to do more sessions with me like this or not? Come on, tell me. Let's see. And you can be very honest. I'll take the feedback. अगर कुछ नया चाहिए वो बताओ, कुछ अलग तरीका चाहिए बताओ, है ना? Yes sir. में कैसे जाते? When multiple malfunctionings in your body happens, कोमा हो सकता है. Thank you, it was helpful. Thank you for the beautiful comment. It's interactive. Yes, मजा आया. You're honest, Saki. Very good. Thank you for the honest opinion. Very good. Please hit the like button so that I can, this session can reach out to maximum students who are there. जो लोग ये session attend नहीं कर पाए because of some प्रॉब्लम्स और एक्सेसिबिलिटी और इंटरनेट, सबके पास पहुंच जाए. आप लोग जितना लाइक डालोगे इस सेशन पे उतना हेल्पफुल होगा. यूट्यूब और ज्यादा प्रमोट करेंगे सो दैट मेनी स्टूडेंट्स कैन सी दिस सेशन अगेन, है ना? एंड बाकी आप लोग प्लीज सेशन के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है ना वीडियो के, वहां पे डिस्कस करो. दैट्स माई रिक्वेस्ट. आपस में डिस्कस करो. फाइन, इट डजंट ऑलवेज रिक्वायर कि मैं आके ज्ञान देके जाऊंगा. नहीं, you also know, you also have a lot of knowledge, you have internet, you have a lot of resources. Discuss amongst yourself, है ना? चलो सवाल देखते हैं. हाँ, so question क्या है? Saki has a different question. देखो बेटा, I really am not sure कि एक बार कोशिश करते हैं. Let me drink some water. You are telling why do we sweat after drinking water? Let's try it. All of you try it. चलो देखते हैं कि are we sweating? Let's try to understand ki Saki, you have observed something. I drank some water. Let me wait. In the meantime, I'll just read other questions. Let's see if I'm actually sweating. In fact, I'll tell you one thing. Saki, I have a different observation. Last Saturday, Sunday, I go for football and I play football and I play badminton. So जब मैं खेल रहा हूँ, I'm sweating and it's a lot of body heat comes out. When I drink water, my body cools down instead. My body instead cools down and not what you are saying. Saki, I would request, आप please observe करो कि कौन से time पे, what basis और कोई particular situation पे ये हो रहा है या नहीं. If yes, then ask me in the next class. We'll again try to analyze. क्या पता कुछ नया मिल जाए हमें, है ना? Okay, next question. A lot of sir, you are in a AC room. Yes, but the AC I have maintained at a very nominal temperature. Bangalore का जो temperature उसी में है ना? Will not set. ठीक है संजीत, I'll do one thing. I'll try it outside, है ना? Saki, ठीक है. Just observe this कि कौन से situation पे हो रहा है. I'll want to explore this. That's an important question. How a person go to coma? I told you if there are multiple organ failures, multiple in a body there are multiple failures which happens that can lead to a person into coma. The person may not die, but it cannot support all the life supporting functions and it requires a lot of machines to stay alive. ठीक है? So that's coma. जयेश, सचिन सर की क्लास आप कमेंट में देख लो, the community posts.
नए जो सेशंस अपकमिंग हैं आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच वाज कोमा और क्या वेस्टेज बॉडी से एक्सक्रीट होता हो रहे हैं. आर यू आस्किंग इन द कोमा पर्सन अगेन नीड्स मशीन्स टू बी सपोर्टिंग. सर प्लीज टेल मी के लाइव क्लास नहीं होते तो हम क्या पढ़. सर प्लीज टेल मी सर, अब सर जब आपके लाइव क्लास नहीं होते तो हम क्या पढ़े. वेरी गुड अतुल, वेरी गुड क्वेश्चन. बेटा जब लाइव नहीं हो रहा है आप क्या करोगे, ये चीज पहले रिवाइज करोगे एंड क्वेश्चंस सॉल्व करोगे. दैट्स इट. ठीक है, यही करना है. और बेटा सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के तो नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है. व्हाट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो कि सेल फ्री सिस्टम, सेल के बाहर हम कर रहे हैं, इसको आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल रहे हैं. What is metabolic reactions? I've answered this. Sir, does the size of the organism remain same in asexual reproduction? नहीं, asexual reproduction में organism के size change होता है. Organism in fact grow होते हैं, then it divides into two organism and then again grows, matures and ऐसे होता है, right? So ऐसा नहीं है कि cell grow नहीं होगा. जेई बैच कब स्टार्ट होगा बेटा? देयर इज अ जेई चैनल, वहां पे एक बार फॉलो करो, यू विल गेट व्हाट एवर क्वेश्चंस. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एनसीईआरटी में कुछ ट्विक करके सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. ओके फाइन. आई थिंक आई हैव सर प्लीज टेल अ वे टू रिवाइज इट बेटर. रिवाइज कुछ नहीं, जब मैं पढ़ाता हूं ना तब नोट्स बनाना है, वो नोट्स रेफर करना है व्हेन यू रिवाइज. एंड जब नोट्स रेफर कर रहे हो just try to think or see if you are able to recap whatever I have said, whatever you have studied in the book. That's what revision is all about. Revision मतलब फिर से पढ़ना नहीं होता है. जो तुम नोट्स बना रहे हो, running notes, those notes, if they are able to help you recall everything like a movie, that's revision. It was okay. So students, see Sachin sir is already there, talking to you, and yes, all of you much waited. Sachin sir is already replying to you, and thank you sir for the great comment. And Sachin sir is here, and sir, everyone was waiting for you, so they would want to do a really good session with you. So yes, all my students, and see Sachin sir is here. Great. Any question? Sir, from now I'm following your session regularly and become your favorite student. Saki, great. Thank you for this. I want all of you to become my favorite student, and Sachin sir bhi idhar hai, so you should also be aiming to become the favorite student of Sachin sir also. Okay? Okay, great. Any other questions? I think we have hello sir, big fan of yours. Great. Chalo, great interaction. I think it's time now. You should go take some rest, and अगर हो सके तो आज थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना. Right? Fine, great. Let me tell you a goodbye and a good night. Keep revising, keep learning, and I'll see you soon. Bye bye. Take care.